Yes, Pushpin. Please tell us about yourself. Ma'am, my name is Pushpendra Singh. Done my schooling from Sainik School, Chittorgarh, and I've done my graduation in BSc Chemistry honors from Rajrishi Government Autonomous College, affiliated to the University of Rajasthan. And I've done my LLB from Campus Law Center, University of Delhi, and done my LLM from National Law University, Delhi. And I worked as a law clerk in Honorable Supreme Court of India, and very recently got enrolled into the PhD course of University of Delhi, and I hail from Alwar, Rajasthan. Sydney. पुष्पेंद्र, आपने जैसे बताया आपका जो पूरा करियर पाथ रहा है, इट इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एकेडमिक्स। आप एकेडमिक्स में आपने एलएलएम भी किया, अभी आप पीएचडी भी कर रहे हैं। आपने जुडिशरी क्यों चूज किया है? Ma'am, academics I have taken is as an alternate option because after the LLB itself, I started preparing for the judicial services. But in the meantime, the COVID pandemic happened, and it was very much uncertain that when our vacancies are going to be rolled out and when things get back to the normal. So at that point of a time, along with my preparation for the judicial services, I decided to take that opportunity to excel my higher education. So during that COVID pandemic time, I got enrolled myself into the LLM course in NLU Delhi, and my half of my course itself was in the online mode since the COVID pandemic situation was there. But since things got normalized, and in the second semester, the I got an opportunity to attend the offline classes as well. And after that, ma'am, since I was appearing in the judicial services examination for over a period of a time. But apart from that, to take an alternate career option, I decided to simultaneously go for the academics also, because no doubt academics is also a good profession. जुडिशरी क्यों करना चाहते हैं पुष्पेंद्र? Ma'am, there are various reasons for the same. The first and foremost thing is that I consider that judiciary is not only a job, rather it is a kind of service where you are directly contributing at the ground level by imparting justice to the betterment of the society. And this is the also I consider this is a platform where I can make the maximum utilization of my legal knowledge that I have acquired and the profession I'm into. And I think these are the factors that have motivated me to be in आपको judicial. ऐसा लगता है कि शायद ग्राउंड रूट लेवल पे आप जुडिशरी में काम कर पाते हैं? क्या आप लिटिगेशन में होते अगर? तो लिटिगेशन में क्या आप जस्टिस इम्पार्ट नहीं करवा पाते या ग्राउंड लेवल पे लोगों की मदद नहीं कर पाते? व्हाट Indeed, अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल डायरेक्टली? मतलब वहां तो आप ज्यादा लार्जर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर आप प्रो बोनो केसेस लड़ते तो। इसके yes. अलावा आप एनजीओ में भी जा सकते थे इफ इम्पार्टिंग जस्टिस वाज योर क्राइटेरिया। Yes, ma'am. Ma'am, indeed, litigation is a very noble profession, and it also helps along with the bench to for the imparting of the justice, because the litigants and the advocates are helping the judges for doing the justice. They too are same wheels of the cart, ma'am. I consider, but ma'am, in the litigation in the initial way, as far as the pro bono is considered, that. Does not give a sense of economical security to me. So I was in the initial days that would be very difficult for taking up the pro bono cases. Apart from it, ma'am, as far as the direct impact in the society is to be considered, ma'am, no doubt they are the one who are directly engaging with the client, but they are representing themselves through their own side only. While on the another hand, the bench is having the opportunity to analyze the situation after hearing the arguments from both the parties. So he is in better position for doing the justice. So that's why I got it, that word, ma'am. नीरज? ये बताइए पुष्पेंद्र, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है? Sir, my favorite subject as far as is considered is Indian Evidence Act. ओके, ये बताइए जो पुलिस ऑफिसर है सेक्शन 24-25 में, क्या Yes. समझते हैं पुलिस ऑफिसर से? So the police officer, the words used in the section 24 and 25 of the Indian Evidence Act is used only as the police officer. However, it has been interpreted by the Honorable Supreme Court of India that it includes the police officer who is having the power to investigate. So the one who are the in the enforcement direction directorate and others, they are also to be considered as a police officer under the
24 and 25 of Indian Evidence Act, sir. तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की पावर से ही हम देखते So they are having the power to investigate and file the report for the same. This was the criteria. हैं? ओके, ये बताइए कि पर्सन इन अथॉरिटी किसको माना जाएगा सेक्शन 24 में? So the person in authority, as per under section 24 of the Indian Evidence Act, covers the wider interpretation has been used by Honorable Supreme Court, and any person who is having the authority to influence the decision would be considered as the person in authority, sir. ओके, सिर्फ जो डिसीजन चेंज कर सकते हैं उसी को पर्सन अथॉरिटी माना जाएगा, उसके अलावा किसी और को नहीं। मतलब अगर एक गांव का सरपंच है तो क्या उसको पर्सनल अथॉरिटी माना जा सकता है? Person in authority can be considered, but his statement will not be relevant under section 24 because I'm not exactly recalling the words right now, sir, but section 24, apart from the person coming from the person in authority, uh, who may influence the case, and it is related to the charge of the charge that are being framed against the accused. So the sarpanch that are making any statement may be an influential person, but if that statement is not related to the charge to which the accused is charged, then sir, that will not be relevant. एक नर्स है, उसके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, और जो इन हाउस सर्जन है, इन हाउस डॉक्टर है, उसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो क्या उस डॉक्टर को इन द केस ऑफ द नर्सेज एम्प्लॉयमेंट क्या पर्सनल अथॉरिटी माना जा सकता है? Sir, as far as my limited knowledge, that will not be considered to be in person in authority, sir. पर्सनल अथॉरिटी आपके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जज, मजिस्ट्रेट और जो Police पुलिस officer. ऑफिसर है Yes, यही sir. हो सकते हैं? Yes, sir. एक डॉक्यूमेंट Compulsory. है, एक Yes. डॉक्यूमेंट है, वो है 1994 का। Yes, sir. उसको एविडेंस के रूप में यूज किया जाना है इन द ईयर 2025, Yes, sir. लेकिन वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट के सामने इन द ईयर 2020। तो 2020 में 26 साल पुराना डॉक्यूमेंट था, जब उसको यूज किया जाना एविडेंस के रूप में तब वो 31 ईयर्स ओल्ड है। तो क्या सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन यहाँ पे यूज किया जा सकता है? Sir, section 90 uses the criteria of the document produced is of 30-year-old and produced from the custody. Then, sir, the section 90 can be used. तो 30 ईयर्स कब से काउंट करेंगे हम, जिस दिन उसको एविडेंस के रूप में यूज किया जाना है या जिस दिन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट में? Sir, the words that are used under section 90, as far as I'm able to recall, is that the document is produced, is 30-year-old and is produced from the custody. So it will be taken as, जब uh, प्रोड्यूस किया गया था 2020 में तब वो 26 साल पुराना डॉक्यूमेंट था। yes, sir. But sir, I think in the interest of justice, it is used, that word, when it is to be used, it is to be taken into consideration. इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस तो बहुत सारी पावर होती है, फिर वो इनहेरेंट पावर की हम बात नहीं करते हैं। व्हाट Yes, इज sir. द प्रिजम्पशन? So the presumption does not, I think I'm not exactly recalling, but I think when it is to be used, that is the day that is to be considered, sir. अभी के टाइम पर अगर हम बात करें कि काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी साइंस ने डेवलपमेंट किया है, सो अगर कोई भी लेजिटिमेसी को लेकर के क्वेश्चन होता है तो क्यों ना हर मामले में डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम का इजी सॉल्यूशन मिल जाए? Sir, no doubt the technology has grown up to the very next level. But sir, as far as the legitimate test is to be considered, this is the section 112 presumption deals with the same, and it deals about the conclusive presumptions. And this is brought into the legislation, keeping in mind the social and the social factors in the mind, and to prevent the abuse towards the children and to protect the interest of the children. So I don't think that in the criminal, in the civil matters, and to recognize the paternity claim, the DNA tests are to be allowed in a very routinely manner. That will not be an appropriate case.
However, in the criminal matters, the DNA test can be used because the crime is considered to be a wrong against the society. So the larger societal interests are involved in the case, sir. तो अभी अगर हम बात करते हैं, डीएनए टेस्ट कब अलाउ किया जाना चाहिए जब लेजिटिमेसी की बात होती है? Sir, as far as there instances where the Honorable Supreme Court has allowed the DNA testing, where it found that the case of the respondent is very well found, and if it will not be allowed, then it will cause a graver injustice, because the right of the one party, the Honorable Supreme Court quoted that the right to the one party cannot be used to do the injustice to another party. If such kind of a situation is existing, then in such a situation, for determining the legitimacy, the DNA test may be allowed, sir. बताइए, अगर एक डॉक्यूमेंट जो कि रेलेवेंट था उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है एविडेंस के रूप में, एडवर्स पार्टी कब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकती है? एट व्हाट स्टेज ऑब्जेक्शन कैन बी टेकन? Sir, pardon me, sir. Can you please repeat the question? एक इररिलेवेंट एविडेंस है जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, एडवर्स पार्टी के पास अगर ऑब्जेक्शन लेने का राइट है, तो किस स्टेज पर ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है? Sir, if irrelevant document is or irrelevant evidence is used in the court, then the opposite party can take the objection at the very instant, sir. के बाद की लेटर स्टेज पर वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते? What, sir? लेटर स्टेजेस पर अपील, या अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जाता है, तब Yes, क्या sir. वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते? Yes, sir. At that time also the objection can be taken up, sir. ठीक है। और अगर यही सवाल एडमिसिबिलिटी को लेकर के है, तो फिर ऑब्जेक्शन कब लिया जा सकता है? Sir, regarding the admissibility, the objection can be taken at the earliest, because if Section 167 of the Indian Evidence Act talks about if any inadmissible document or inadmissible evidence has been made admissible, or admissible evidence was left out, then it will not make the trial as or the decision as invalid if it was decided by the competent court, sir. तो लेटर स्टेज के ऊपर अगर ऑब्जेक्शन लिया जाता है, लाइक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो Yes, क्या sir. एडमिसिबिलिटी को लेकर के ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है? So the objection can be taken, but if the court will consider the another evidences also take into the consideration, and if leaving the inadmissible evidence apart, the decision can be held on the basis of the another evidence, then it will not have any of the effect on the decision that has been made by the court, sir. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। पुष्पेंद्र, आपके डेजर्टेशन का टॉपिक क्या था? Ma'am, the topic of dissertation of my LLM was the applicability of the colonial offense of sedition in modern India. सिडिशन लॉ, जो न्यू क्रिमिनल लॉज के अंदर अभी सिडिशन और नए चेंजेस जो आए हैं आईपीसी में, उनके बारे में बता सकते हैं? Yes, ma'am. Ma'am, the earlier the law of the sedition was contained under the section 124 capital A of the Indian Penal Code 1860, and however the changes have been brought into the criminal laws, and the IPC has now been replaced with the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, and the word sedition or the offense of the sedition has been done away with, and it has been replaced with the new criminal offense that is affecting the sovereignty, unity, and integrity of India. And the provision regarding the same are contained under section 152 of Bharatiya Nyaya Sanhita में. तो दोनों के एप्लीकेशन में अब क्या डिफरेंस है? किन वर्ड्स पे जो मेजर कॉनोटेशंस थे सिडिशन लॉ के, उनमें क्या चेंजेस किया गया है? Ma'am, basically the sedition law was an earlier under the section 124A. What really mattered was excite or attempt to excite the disaffection towards the government established lawfully. But however, under the new provision of the Bharatiya Nyaya Sanhita, it is not only limited to the inciting or exciting or attempting to excite the violence, but it also includes the supporting through the financial means,
but however, against the government established by lawful authority, it is not used, and the words sovereignty and the unity and integrity of India that are used, ma'am. The more emphasis have been given to the unity and integrity of the India. सेक्शन 340 341 ऑफ सीआरपीसी, इसमें फॉल्स एविडेंस के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग है वो Yes, कैसे ma'am. होती है? Ma'am, against the false evidence, the procedure regarding the same is contained under section 340 of the Criminal Procedure Code, and the it is proceeded on the basis of the complaint that is made by the court, and section 341 deals with the appeal in these cases, ma'am. How the appeal is being made and to whom the appeal is being made? Ma'am, as far as I can recall, the provision regarding the appeal are uh, appeal is made to the court to which the appeal ordinarily lies, ma'am. Okay. सेक्शन 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किस बारे में बात करता है? Ma'am, section 73 of the Indian Evidence Act talks about the provision regarding the handwriting and the uh, comparison of the handwriting. The court can make the do the comparison between the handwriting. So कोर्ट that's. कैन डू द कंपैरिजन या फिर कोई स्पेशल एक्सपर्ट को बुलाकर वो कंपैरिजन कराया जाता है? Ma'am, even the expert can be called out, and the court itself or can do the comparison. And this was held by the Honorable Supreme Court in state of UP versus Ram Babu case. That court itself can also do the comparison, ma'am. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड पुष्पेन। ये आपका पहला मॉक इंटरव्यू था, एक और मॉक इंटरव्यू आप कंडक्ट कर लें इसके बाद, Yes, और ma'am. बेस्ड ऑन अ फीडबैक ये आप थोड़े चेंजेस है जो इनकॉर्पोरेट बिल्कुल कर लें अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर। आपका Yes, 21st को है ना मॉक इंटरव्यू? yes, ma'am. ठीक है, सो ओरिएंटेशन मैं आपको दे दूंगी स्टार्टिंग विद आवर फीडबैक। नीरज, हाँ, ये बताओ आप पुष्पेंद्र की, आपको लगा नहीं कि बहुत सारे आंसर आपने वो बीटिंग अराउंड द बुश वाले बहुत जेनरिक आंसर दिए हैं, Yes, sir. जो एक्चुअली में आपसे पूछा गया था वो ना करके जो एक लेमन आंसर होता है कि ठीक है ऐसा होता होगा, Yes, आपने एक तो वो आंसर दिए हैं। दूसरा, कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद आप बहुत लेंदी आंसर दे रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया था, मतलब आप उसको भी जस्ट बिकॉज कि आपको पता है या आपको लगता है कि आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ा सा और उस चीज के बारे में बता दें, तो वो अननेसेसरी आप आंसर कर रहे थे बहुत लेंदी। ठीक है। yes, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए। जब आप बोल रहे हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट है, yes, तो sir. मेरे ख्याल से उसके बारे में फिर आपको बहुत ज्यादा चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रोसीजर लॉ आप बताते हैं तो हाई कोर्ट के जजेस जो है वो आपको इस चीज के ऊपर काफी प्रोसीजरल एस्पेक्ट से पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो जहां तक हो सके अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिएगा। आप बता दीजिए कि आपने सारे ही सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दिया है, ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, उनको जो पूछना है वो पूछेंगे, लेकिन अगर आपने कोई सब्जेक्ट बताया उसके क्वेश्चंस आप नहीं बनते तो थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव लगता है। तो मुझे लगता है कि एक बार ये कॉन्सेप्ट्स जो है आप पढ़ लीजिए, आपको अभी ब्रशअप करने की जरूरत है अपने चीजों को। Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा मैम बताएंगे आपको। सर, उसका आंसर सर जो आपने 90 ओके। इंडियन। और जिस दिन एविडेंस के रूप में यूज किया जाता है उस दिन से फिर आप 30 इयर्स देखोगे, ना कि प्रोडक्शन से देखोगे। दूसरा, जब एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी की हम बात करते हैं तो रिलेवेंसी इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो एट एनी स्टेज आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो, लेकिन एडमिसिबिलिटी जो है इस चीज को लेकर के आपको अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर ही ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर एडमिसिबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन रेज नहीं किया तो आप बाद में नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ दो अलग चीजें। क्वेश्चन ऑफ लॉ को के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के भी ऑब्जेक्शन रेज करना चाहे आप कर सकते हैं। ओके, ओके सर। हाँ, और पर्सन अथॉरिटी में जो इन्फ्लुएंस कर सकता है पर्सन एंड जो भी उसके अगेंस्ट में चार्जेस लगे हुए हैं या बाकी सारी चीजें, तो इस चक्कर में अगर कोई इन हाउस सर्जन है तो वो नर्स के केस में, या अगर कोई सरपंच है तो वो किसी पर्सन के माइंड में ये इम्पैक्ट दे सकता है कि भाई ही इज द पर्सन जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ जो भी उसके पास पावर है, तो वो लोग भी पर्सनल अथॉरिटी माने जाते हैं।